क्या कभी आपने सोचा है कि इफ़ यू हैव रेड डिफ़िकल्ट वर्डेड बुक्स जिसमें बहुत ही से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस और वर्ड्स हैं एंड अ सिंपल लैंग्वेज बुक लाइक दिस at the same time, what will happen to your brain? You know, your brain will be exposed to two different form of writings at the same time. ये आइडिया आपको कैसा लगता है? क्योंकि दिस इज समथिंग दैट वील एक्सप्लोर इन टुडेज वीडियो. तो ये वीडियो होगा हाउ टू डू दिस. Nowadays, I generally read either 2 or 3 books at the same time, and I will give you a stepwise process, a breakup of the process of reading 2 to 3 books at the same time at a given day. Let's start. In order to read a book, I usually make up my mind before I actually start the activity. Though now it has become a habit, but usually the routine is to get up early in the morning or sleeping late at night and having an alone time so that I can concentrate on reading those books. And before I start even reading the book, I have these two things paraphrased in my mind. मैं अपने दिमाग में ये दो चीज़ें बोलता हूँ या ये चीज़ें करता हूँ before I actually start the physical process of reading the book. And I say it like this. Now ये ज़रूरी नहीं है कि इसी order में हो या exact same words हो, but the essence is that I say to myself that Nagendra, you are going to read 2 books today, and in each of the book you will read X number of pages. Now that page can be 2, 4, 5 depending on what is the reading capacity on a given day. Now why I do it? Now I do it because if you realize that we think before we do any action, हम कोई भी एक्शन करने से पहले उसे सोचते हैं, चाहे वो कहीं जाना हो या फिर कुछ काम करना हो, और जो काम हम बिना सोचे समझे करते हैं उसे हम हैबिट कहते हैं. लेकिन अभी हमें रीडिंग की हैबिट ही नहीं पड़ी है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपने आप से कहना कि आप वो काम करेंगे. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, let me tell you that what happens in our mind is that the seed of affirmation pushes us towards doing that action. और एक बीज हमारे दिमाग में डलता है और वो हमें पुश करता है उस एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. ये एक जनरल प्रोसेस है, उसको मैंने सिंपल वे में आपको ब्रेक डाउन करके दिया है. सो इन अ नटशेल, मोटा मोटा अगर आपको 2 से 3 बुक्स पढ़नी है तो वो आइडिया, वो थॉट आपके अपने दिमाग में डालना पड़ेगा एंड यू हैव टू अफर्म दैट थॉट. वो सोच आपको पॉजिटिव करनी पड़ेगी अपनी माइंड में. And that's how it works for me. And the next step is that I make sure that my intention is on reading the book. I know it might sound silly, and intention is an overrated word which has been thrown around carelessly. But मेरा idea है कि अगर आपकी नीयत, आपकी intention अगर सही है, then you'll be able to make an effort. Why am I saying so? Because usually when you're getting up early in the morning and you are reading that book, and after a while that book will start to bore you. So that critical question needs to be asked, that why am I getting up early in the morning and reading that book? That why needs to be clear. That why could be that you want to improve your English, your communication skills, or you want to know about the world around you, the information that you want to grasp, and the best way to do it, you have to tell that mind of yours, which is ticking in different direction, getting bored, getting distracted, that you are reading this book for those reasons. And if your why is clear, it becomes a lot easier to read that book. अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, आपकी नीयत साफ़ है, आपकी नीयत है उस बुक को पढ़ने की, तो वो उस बुक के पढ़ने में दिखेगा. एंड it will drastically improve your concentration and your per page speed. और जनरली मेरा वाई कैसे स्टार्ट होता है मैं आपको बताता हूँ. मेरा वाई उस बुक को रीड करने का तब स्टार्ट होता है जब मैं उस बुक के बारे में पहले से ही कोई थॉट फॉर्म करता हूँ. द फर्स्ट थॉट दैट गेट्स फॉर्म्ड इन माई माइंड, लाइक मैं अपनी बुक्स जब पढ़ता हूँ उसकी रिव्यू बेसिकली अलग अलग साइट्स पे देखता हूँ, एंड आई सी इफ़ दैट बुक इज़ इंटरेस्टिंग इनफ, या फिर उसके बारे में कोई आर्टिकल या फिर उस बुक के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री या किसी इंटरव्यू में कुछ सुना हो, तो वो मेरा इंटरेस्ट उस बुक के बारे में बढ़ाता है. एंड दैट फर्स्ट थॉट actually gives me the reason why I should read that book. My why becomes stronger with that information loaded in my brain. So it is really important to know why you're reading that book. Every time you open the page of that book, it becomes worthy, it becomes interesting, it becomes all the more important for you to read that book because you want to have that information. ये एक ट्रिगर की तरह एक्ट करता है और इस तरीके से आप उस बुक को पढ़ना चाहते हैं. सो
The most important thing is to know why you're reading that book. एक एग्जांपल देता हूँ, मैं हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पढ़ रहा हूँ। ये एक फ़िलासफ़ी की बुक है, इसका लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है और इसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा था। वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। इसके पीछे थॉट जो हिंदू लाइफ के बारे में, हिंदू धर्मा के बारे में उन्होंने बता रखा है, विच इज़ रियली यूनिक। डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो सारी चीज़ मुझे बोर कर रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को पुश किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इनका हिंदू धर्म पर क्या टेक है, वो क्या बताना चाहते हैं। एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनिशियली इट वॉज डिफ़िकल्ट, बट एज आई रेड एंड एज आई गॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो शुरू में बोर करती हैं, लेकिन जब आप ग्रिप पकड़ लेते हो उसकी कुछ पेजेस के बाद, तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगने लगती है। क्योंकि आप याद रखिए, एक बुक में शायद आपको कुछ चीज़ें बोरिंग लगें, लेकिन ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपको चाहिए और आप इंटरेस्टेड होंगे उसमें। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. So the intention is very, very important. Now let me tell you, once you start reading that book, so please open your mobile phone, start the clock and put a timer on it and start it. Because जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो ऐसा होगा जब आप बोर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, और ये यूजुअल नॉर्मल चीज़ है। तो जैसे ही ऐसा होता है तो मेक इट अ हैबिट टू लुक एट द टाइमर. दैट टाइमर विल टेल यू दैट हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट ऑलरेडी इन रीडिंग दैट बुक, और आपको फिर से उसको पढ़ना है। तो एक तरीके से वो क्यू है, और उसको देखते ही आपको वापस अपनी बुक पे जाना है, क्योंकि इट विल गिव यू सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी टू कंप्लीट दैट बुक। टाइम निकला जा रहा है, and start reading that book again. Now what will happen if you start doing that? Your number of pages that you read every minute or every hour will increase. अगर आप 1 घंटे पढ़ सकते हैं तो। ना डिपेंड्स अगेन। सो एक टाइम रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, इनफैक्ट कॉम्प्रीहेंशन को भी इम्प्रूव करेगा। और मैंने देखा है जब ऐसा आप करते हैं ना, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाता है बुक पढ़ने में। और अगर आप बोर हो रहे हैं तो टाइमर को देख के वापस आएँ, और जो नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ उसमें आपको क्लियरली एडवांटेज मिलेगा इस टाइमर का। तो वो क्या है? लेट्स गेट टू नो अबाउट इट. Now once you have started reading the book and the timer is on, and even if you're getting distracted, you go back to it. Usually क्या होता है कि बहुत बोरिंग चैप्टर्स हो जाते हैं, कुछ बहुत बोरिंग पैराग्राफ्स हो जाते हैं कुछ, तो उनको आपको क्या करना है? बेसिकली यू डोंट हैव टू जस्ट रीड एवरीथिंग दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू. आपने पहला पेज पढ़ा जैसे तैसे और आपको आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो डू वन थिंग. You are on the second or third page and suddenly you find the words difficult, sentence difficult, तो उन्हें छोड़ दीजिए. Skip that paragraph and move on to other one. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टोरी की पकड़ एक एक पैराग्राफ को पढ़ के ही आनी है। ये कोई मूवी नहीं है कि इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आप एक सीन निकल जाएगा, क्योंकि बुक आपके हाथ में है. यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट पैराग्राफ लेटर ऑन. मैंने कई बार किया है और आई एम रियली सक्सेसफुल when I'm feeling bored, when my intention is not there in reading the book, when I've tried everything, it's a bad day for me, और मेरा रीडिंग पीक जिसे मैं कहता हूँ कि मैं पीक पे नहीं हूँ, वो स्टेट नहीं है जहाँ पर मैं उसमें खो नहीं पा रहा हूँ, जब ऐसा होता है तब मैं ये करता हूँ. then for a beginner and somebody who wants to do this, it is really important to just skip the paragraph and move on. एंड आप अगर ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कि ये टाइमर वाला चीज़ भी काम करेगी. आप बुक पढ़ेंगे और वो जैसे ही पेज पलटेंगे, आप अगले पेज पर जाएंगे और पढ़ेंगे, तो वो टाइमर चलता रहेगा. आप देखेंगे कि आपने इतना पढ़ लिया है, एंड देन यू वांट टू गो बैक टू दैट पैराग्राफ दैट यू हैव लॉस्ट आउट ऑन. एंड क्योंकि आपने आगे पढ़ लिया है तो प्रॉब्ली पिक्चर आपको बहुत क्लियर होगी, और आगे भी जो पीछे का जो छूटा हुआ पैराग्राफ है वो इजीली आपके समझ में आ जाएगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम एफर्मेशन, इंटेंशन एंड टाइमर, यू ऑल्सो नीड अ फिजिकल टूल to give you an extra edge when you are reading multiple books. Now for me it is a highlighter. It is like a sword in your hand which kills distraction, brings your focus back into the book, and also it helps you highlight the text. And I use it heavily when I'm reading a book, because when you are reading multiple books, it becomes a handy tool in a hand to be able to focus and highlight important text. और जब वो ऐसा होता है तो मैं उस हाईलाइटेड टेक्स्ट को बार बार पढ़ता हूँ, एंड यूजुअली इट हेल्प्स मी गेन बैक माई फोकस एज आई टोल्ड यू बिफोर, बट ऑल्सो गेट इन टू दैट ग्रूव ऑफ रीडिंग द बुक अगेन. एंड द फाइनल स्टेप इज व्हेन आई एम रीडिंग 2 books, आई वॉन्ट टू कीप इट सिंपल. एंड दो इट लुक्स लाइक दो these are 2 separate physical books, but I don't get overwhelmed and I don't worry too much, and I wrap my head around the enormity of the task कि कितना मुश्किल काम है ये मुझे करना है,
और ये मेंटल प्रेशर होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा पढ़ना, हे भगवान इतनी सारी पेजेस पढ़ने हैं, 2 बुक्स पढ़नी है. व्हेन दैट मेंटल प्रेशर कम्स इनटू प्ले, you won't enjoy reading it and you will find it difficult. तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है. So the process is, I'll read few pages of book 1 and try to grasp the meaning of what I've read, be with it for few moments, highlight the text and move on to the second book and repeat the same again with the second book. And also at the same time, I also make sure that if I'm enjoying book 1, then I will keep reading book 1 and I'll not move on to the second book. And if I'm not enjoying the second book, I'll not read the second book more. Instead, I'll devote more of my time to book 1. जबकि ऐसा ही आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर बुक में बन रहा है तो लीव द सेकेंड बुक फॉर द नेक्स्ट डे until you read both these books again the second day and then the third and then the fourth. The idea is to keep the process simple and keep it going every day until you get into this habit of reading multiple books at a time. So guys, this was it. These were the tips for reading multiple books at a time. I hope you enjoyed the video, and if you did, then please like hit करिए, share करिए अपने friends के साथ जो books पढ़ना चाहते हैं. Subscribe to my channel if you haven't already, and make sure that you keep watching my videos about trending topics, about books and about tips on reading.